we have an eminent personality in our domain as a resource person. He is Professor and Head of the Department, Dr. Anup Thakar, the Professor and Head of the Department of Panchakarma, IPGT and RA, Gujarat Ayurveda University, Jamnagar. He is the Director of International Center for Ayurvedic Studies, and he has visited many foreign countries including France, Germany, Switzerland, Japan, etc. for the propagation of Ayurveda, and he has published more than 70 papers in peer-reviewed international journals. And he is the principal investigator of various projects of national importance including Ayur Genomics. And he has guided more than 20 PhD scholars as well as PG dissertations, more than 50 PG dissertations. And now I invite Dr. Anup Thakar to deliver a brainstorming session on Vamana today. So let me clear first, I have it is 9:90, so I have to take for 1 hour or 1.5. I think it's up to 10:30, it's okay? Fine. I know very well that after you have all become teacher, it's difficult to sit here and listen somebody, and you are doing that job since last 6 days. Dutifully. So I understand the things, because after being a teacher, it's difficult to sit at one place and to listen somebody for more than an hour. So, but I got the review that you did it, religiously. So that's the nice thing. It shows your commitment and interest. So today we are going to discuss about women. First of all, I would like to tell something to you, that I don't have a habit to take lectures. Like I'll speak and you will listen, and 4 log पीछे सो रहे हैं. That kind of thing I don't enjoy. Actually, and I won't tell you all are teachers. I am also a teacher. Let me see so what. Let's be open and we'll discuss the thing. थोड़ा चर्चा करेंगे तो मजा आएगा. It's not like that. I'll only say something new to you. You may say something new to me also. So it will be open discussion rather. And feel free at any place, if you have a question in your mind, you can ask me. We'll discuss it. क्योंकि वो ऐसा नहीं कि पीछे लेक्चर खत्म हो जाए फिर हम चर्चा करेंगे, फिर पता ही नहीं कि वो कहाँ से क्या बात थी. So that won't happen. The purpose of this ROTP is very well that to get updated or to get the things कहाँ क्या चल रहा है, नया क्या है साइंस में, थोड़ा अपडेट होना. That is the purpose. I know very well you all are teachers, so you know all the classical things. क्या लिखा है, कौन सा किधर है, किसने अष्टांग हृदय ने क्या कहा, अष्टांग संग्रह ने क्या कहा, सुश्रुत ने क्या कहा, वाग्भट क्या कहता है. You know all that. I am not going to discuss that thing. Right? जहाँ जरूरी होगा बोलना पड़ेगा बोलेंगे, otherwise we will be more towards practical. Right? So that will be the approach. And feel free. So woman definition, I will not to discuss on that. It's a best to eliminate kapha. The drugs, ये मुझे सब रखना पड़ता है because there is a syllabus is given to me that you have to take all these points. So ritual होता है ना कि पहले गणपति पूजा शुरू होगा, फिर आगे जो होगा तो उस हिसाब से शुरू होगा. But जहाँ हमको ज़रूरत होगी वहाँ हम there only we will stress. Right? So Vaman Dravya, drugs used to induce Vamana. These are the qualities, means Ushna, Tikshna, Vyavai, Vikashi and Urdhvabhaga drugs are to be used as the Vaman drugs.
So this is the list of the drugs you know very well. Madan Madhukulam Nimba Bimbi Vishala, you know the slok of Ashtang Hriday. So this is enlisted drugs. These many drugs can be used for Vamana, but we all are aware that why it's coming. So this is the list is continuing up to Ela. So any of the drugs you can use for Vamana. It's not necessary that all the time you can use Madanpal, but you know very well why we are using Madanpal. That is due to Anapayitvat, and it has a less complication. And as in Falmatra Siddhi, Charak has mentioned different drugs for the different conditions, like Ikshvaku has been told for Prameh, or Jimutak has been called for Kust, or Dhamargav for Udar Rog, and Kutaj for Rudra Rog, all these things. But practically, means theoretically, these all things are there, but practically, I haven't ever seen that is somebody using these drugs for particular this condition. Like it has been told that Kutaj should be, means Indrayav should be used for Rudra. But have you ever seen anybody is administering Vamana in Rudra? No. And these are the problems, actually with Rudra, what you should consider, that also we have to think, and we have to decide that whether we are considering ISD or other conditions with Rudra or not. We should consider or not. So that is another issue. So we won't touch that thing. But we have to give the knowledge of all these drugs to students, that if Madanpal is not available, any of this can be used. We have conducted different studies at Jamnagar with use of Krutavedan, use of Ikshvaku and all that things. But basically, whatever the smoothness we get with Madanpal, that smoothness is not there. And so Madanpal is the best choice. And in India, it's plenty of Madanpal is available. So I think we should not think about other drugs to use. Of course, when I focus on this list, when I teach to foreigners, we have regular teaching to the 3-month introductory course for foreigners and all that things. For them, I'll tell if Ela is available, you can go for Vamana in your place. If Nimba is available, you can use Nimb. So for them it's okay, but for us, Madanpal is the best. Next, please. So in Kalstan, they have given very much importance to the this preparation of the drug. Another important aspect I would like to share with you. In Ayurveda, what we are doing, usually it's a tendency of Vaidya. I discuss this thing at many places. When patient comes to us, and if we tell that this medicine you have to take with this Anupan, and for this period, and you should not eat this thing, and all the restrictions are released. If the patient will ask you that, sir, is it possible if I eat this thing, or if I cannot take what? Are there any option? So what is the common response of Vaidya then? आपके पास पेशेंट आता है, कहता है कि सर ये आपने काढ़ा दिया, मुझे तो पीना नहीं होता, मैं नहीं पी सकता. आप क्या कहते हैं? Usually, don't tell me theoretically. Usually आपका क्या रिस्पॉन्स होता है? ऐसा देते हैं? Usually ऐसा करते हैं? हाँ. Usually what is the impression in the society of Vaidya? वैद्य के पास जाएंगे तो वो तो यार वो कहेगा ऐसे करना पड़ेगा, ये खाना बंद कर दो, वो खाना बंद कर देना पड़ेगा, ये दवाई देगा जो हम नहीं ले सकते, उसको कहोगे तो ऑप्शन भी सुनेगा नहीं. But we are doing just opposite
to whatever Charak and Shushruत has told to us. 6 चैप्टर वमन और विरेचन औषधि के डिफरेंट प्रेपरेशंस के दिए, इमेज वाई वो कह सकते थे ना यार मदन फल लो, छुट्टी करो, बात खत्म, उसको चटा दो हनी के साथ और हो गया, दैट्स द बेस्ट थिंग इजंट इट. बट देन इवन दे उन्होंने कितने ऑप्शन दिए. भाई वो चाट नहीं सकते तो उसको पिलाओ, क्वाथ बनाओ, दूध में मिलाओ, क्वाथ में मिलाओ. वो भी नहीं कर सकता है, पी नहीं सकता है तो उसको पाउडर दो, इफ ही इज रेडी टू टेक पाउडर. वो भी नहीं कर सकता है, लास्ट में वो वहाँ तक चले गए कि सुंगा दो उसको कमल के फूल में रात को डाल के, मॉर्निंग यू गिव इट हिम टू स्मेल. कितने ऑप्शन दे दिए. एंड व्हाट इज अवर एटीट्यूड, वी वेरी रेयर कंसीडर द साइक ऑफ द पेशेंट. पता नहीं आयुर्वेद में बहुत सारा ये कंसीडर किया गया है, बट वी एज अ वैद्य वी आर नॉट फॉलोइंग. So I think whenever next time you face the patient, if you are following the same thing as I told you, it's good. But if it is not, be friendly to the patient and उसको ऑप्शन देने चाहिए. लास्ट में हम विल डिस्कस सम स्टडीज जिसमें क्रूशरा का प्रयोग किसी ने किया है. विल डिस्कस दैट नेक्स्ट. So these were the woman drugs. And then womanopag. ये womanopag क्या है? What is pag? पैर. What is pag? ये सब आस्थापनोपग, वमनोपग, विरेचनोपग, ये सबको पग लगा दिया. गुजराती में पग मीन्स पैर. Why it is so? What is the role of womanopag? Well, feel free to discuss. ऐसा नहीं है, वो ऐसे नाश्ता किया ना. हाँ. So womanopag क्या है? Which help inducing woman. But they themselves, as an initial, the primary drug will not induce a very good way. Of course, the vacha is also womanopag or sometimes given as hormonal. But especially when it is given along with either madanaphala or any other important hormonal drug, it will facilitate the action of madanaphala. So it will be good. Means we have a doubt on the action of the madanaphala. Not like that. Every time the homologapas may not do its part, but in some patients it is required. ऐसा तो वहाँ कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि woman. womanopag means woman plus upag. There is a two words. मतलब नजदीक और पग मतलब जाना. तो मदन को कैरी करने में हेल्प होता है. सही है. एक्चुअली आप लोग समझ तो रहे हैं कि भाई पग मीन्स सम असिस्टेंस इट्स प्रोवाइडिंग. वी डोंट नो, हो सकता है, बिकॉज unless until we have done any scientific study, even the classics are not clear about that, what is the role of pug. Just they have given the list and we are considering that pug means assisting, right? So that is there. But interesting thing, जैसे इसमें womanopag द्रव्य में है बचा, यष्टि मधु, yeast is there, right? So for vacha and yashti madhu, we have found two studies. Vacha was given in the dog, animal experiment, and in the dog when vacha was given, means before giving anything first vacha was given, and after giving vacha the lots of water was given, and then it was studied that how long it takes to pass through stomach. So in the common means in the normal dog without vacha, it passed through stomach very fast, means comparatively fast in comparison to when in the dogs vacha was given. So what it suggests that it helped to retain the drug or material in the stomach for a longer time, vacha. Same way with the yashti madhu was done in the cat, and in cat the same role yashti madhu played, that it delayed the transit time through the stomach of the material. So in Maman we need it, and that's why I think we are giving, means this way they are helping
little bit. Another thing means common interpretation is it's soothing. You know, all the Vamak drugs are very strong, Tikshna, Ushna. So, for the soothing effect, all the drugs are being given. But if you consider Vacha, then again it's not soothing. But Yasti Madhu and all that things are soothing. So, we have to study in this field much more. मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप सब कल गाइड होंगे, को-गाइड होंगे, कोई PhD करवाएगा, कोई रिसर्च करेगा. You should focus on all these things. You know, usually Panchakarma में means don't go for a thesis like that कि effect of Vaman karma in asthma or effect of Vaman karma in the psoriasis. It's okay. बच्चा कोई काम नहीं कर सकता ऐसा है कि जिसका वो कैपेसिटी नहीं है, then in that case you give that work. But otherwise you should focus on such studies, a little contribution, a small contribution if you can do to the field. छोटा सा भी आप क्यों ये कदम को कहा है या क्यों सदापुष्पी को कहा है कि भाई it's a woman over. If you have an idea, if somebody is there from the basic sciences and if you can do something in that, you try to do that. And unfortunately in other fields, you know, the research is being done by the pharmacy people and other people, they take care of. Like in modern science, I see now people take care of all the research and all that things. But as far as Ayurveda is concerned, only at the level of the PG and PhD, whatever research is being done, that's all. बाकी ज़्यादा कुछ होता नहीं है. So it's our duty to do all these things. And as Panchakarma specialist, it's our responsibility. So whenever next time you plan in such a way that at least some new contribution you should make. Then it will change the scenario. Next question. So Madan Phal is the most important, widely used, best action and no complication. Next. These are the indication. I won't go through the list. Next. Contraindication, you know very well. I won't discuss that. Next. Procedure. Purva karma, pradhan karma and paschat karma. So, Purva karma, what will be the Purva karma of Vamana? Starts from the Deepan Pachan, right? So you will do Deepan Pachan first. Did Deepan Pachan, fine. Then Snehapan. How many days you will do Deepan Pachan? आप तो नहीं बोल रहे. हाँ. How many days you will do? Samyak? Generally 3 days, 5 days or 7 days. Means anybody have experience how long they means longest Deepan Pachan कितना किया आप लोगों ने? Anybody has carried out means Vaman or Virachan? Most of you. So Deepan Pachan कितने दिन तक किया होगा ना यार, बताओ कुछ तो बोलो. For 3 to 7 days. Maybe depends upon the customers, but usually we do for 3 to 7 days. Sometimes when Swastha we are doing, we have done even for 1 or 2 days just for the activity. And sometimes, given the disease, sometimes it will require a long duration, like even for 15 days, 20 days. Very nice, very nice. Actually, that's what I wanted to stress upon. That most of the time, you know, in the Vaman and Virachan, what we do is ritually 3 days or 5 days. We give Chitrakadi or Ampachan Vati or Shankvati or Vaishwana or Hingvastak or whatever available with you. You give it and you are happy that we have done Deepan Pachan. No. You should always focus on the, Ampachan Lakshana. If proper Laghav and proper Agni Dipti is there, unless until you achieve it, don't go for Vaman or Virachan. Most of the time patient compels you that no sir, I don't have a time for this much, I have just 15 days. बोल देना patient को कि no, if
If you don't have a time, don't go for it. If you want benefit, you have to follow this. Because what happens, it gives a bad name to your science. If you do Snehapan, if you start Snehapan without proper Dipan Pachan, it's all useless and your woman or virechan is going to spoil. And ultimately, patient will blame on you, not patient won't tell that he didn't go for Dipan Pachan, or otherwise if you will say that you didn't cooperate, he will say why did you carried out Snehapan then? So you can't say that. In our place, sometimes we have cases that for 15-20 days we have the Nam Pachan, and in some one or two cases, for 1 month even we have the Nam Pachan and then we could not succeed, we turned down the patient. There is a recent case. 2 times he came from all the way from the Veravan, means 300 km away from the Jamnagar. 2 times, for 1 month we kept the patient and we did not means we tried everything but we did not achieve symptoms of Ampachan, and so we left the patient, we didn't go for that. So make sure that proper Dipan Pachan has been done, and then Snehapan. Okay, in between there is a Rukshan, right? In the northern part sometimes Rukshan is not done, it's not very common. All the people don't have idea about the Rukshan. So what should be given for the Rukshan commonly? Fine. So with Thakar or Thakar, when you will go for a Rukshan, is it necessary to go for Rukshan in every patient? Especially to have mega dominance and use Kaulias, especially to otherwise diseases, other. That's good. That's right. If there is a Meda, there is a Kapha or Kapha Avarana, then you should go for Rikshana. All the time you don't need to Rukshana. Right? So, but if there is Kapha and the Meda Avarana, Rukshana helps a lot. So you should go for it. Then Snehapan. For Snehapan, what type of grit or tail you will select? We consider grit, okay? Which kind of grit you will select? Sometimes plain root sugar, otherwise sometimes vyadi, depending upon the acid. Is it so? एक ही मैडम ने नाश्ता किया है, बाकी किसी ने नहीं किया लगता ठीक से. Is it so that we should select the Sneha according to Vyadi? Usually we are doing that, right? Okay. Now tell me for Vicharchika, which type of grit you will select? Mahatikta grit. Fine. Why? Why Mahatikta you will select for Vicharchika? Oh, it's simple, you know very well. Indication. Okay. So wherever it is indicated, okay, fine. Then Pandu. For Pandu, Darima. Who has indicated? Charak ने लिखा है. Tell me, wherever the Dadimadde growth has been mentioned in the Charak, anywhere he has written that this should be given for the Shodhanartha Sneha. In one context, there is a Panchakarma Mahatam, Dadimat, Kalyanakam Mahatam, Snehanartha Prayunchita. Snehana. I am asking Shodhanartha Sneha. No. It is means we are correlating. वो चरक को भी नहीं पता है. But let me tell one thing. We have a study of this. That's why I am sharing with you. I don't know if you have discussion during the Snehan or not. You take Mahatik or you take Panchtik Grit, right? Panchtik Grit, if you give on the last day, what will be the dose? Abhyantar Snehan. For Pushka, if we are giving it for Pushka, we don't do Snehana more than 4
consider 150 ml. In 150 ml, what will be the dose of Panchtikta Churna in that grit? Means how much quantity of the Panchtikta will be there in the grit? Imagine, I am not asking the exact amount. अंदाज से at least 50 gram, at least 50 gram will be there, right? So now if you have to give a Panchtikta grit, Panchtikta Churna in the patient of Kushta, what will be the dose? क्या डोज में देंगे? Panchtikta Churna देना है. If you have to administer Panchtikta Churna in the patient of any Kushta condition, what will be the dose? Maximum dose? 12 gram, 15 gram, maximum 5 gram thrice a day. You are straight away in one dose, you are giving 50 grams straight. And what is your purpose? Shodhana doshot klesh. You are doing doshot klesh or क्या कर रहे हैं? And most of the time you will find that in the cases of the psoriasis or in all these things, with Gritapan only lots of relief in the signs and symptoms is there, isn't it? होता है? चरक सुश्रुत ने कहीं नहीं लिखा है, वो जो वहाँ उन्होंने wherever they have mentioned all this grit, they have mentioned it for shamana as a medicine. Unfortunately, we very rare use all these things. Means as far as Pandu is concerned, Pandu में कोई दाढ़ी मारते ग्रुप नहीं देता. Very rare somebody is giving. Anemia कर देते हैं हम Pandu को. Means we don't diagnose proper Pandu. We, as the patient comes as anemia, and we think in anemia दाढ़ी मारते ग्रुप what we do? We don't have any iron and other things. ये हम आयुर्वेद करते हैं. And that is the problem. So if you are doing Ayurved, do according to Ayurvedic principles. वो mix मत करो. जहाँ लगे जरूरत है वहाँ diagnosis के लिए and for all that things is okay. But everywhere, do not try to treat it. Another thing, अच्छा पेय is the अच्छा स्नेह is the best thing when you are trying to do shodhana particularly. So always prefer अच्छा स्नेह. क्यों patient को परेशान करते हो? Panchtikta grit या Mahatikta grit सूंघा है? Have you ever smelled? है ना? If you have smelled, you know very well how it is difficult to take 150 ml and 200 ml. Why we are making so complicated for the patient? Just give a chipan. It's sufficient and enough for the result. Means we have studies, not one single study. Many studies are there which shows that there is an equal effect clinically with Achhisnepan and Sanskarit grit. Of course, there is a particular condition mentioned by Charak that where you should give a Sanskarit grit, particularly Tikta grit has to be given. In Pitta. So if excess Pitta is there, then you have to give Sanskarit grit to subside Pitta, and there is also scientific reason because when you give grit, it again increases Pitta lot and there will be a problem. So to control that Pitta level, they have advised that give Tik with that, particularly in that condition. Otherwise, no. In the Pitta, if you want to give a Tikta grit, there will be a lot of headache because the secretion of bile will be more when you give the grit, plain grit, and there will be a strong headache. But if you give a Tikta grit, no, there will be control. So that's why in only Pitta condition you should use a Sanskarit grit, and that is also Tikta grit. Otherwise, always use Achhisne. And the best means as good you do Snehana, the woman will be the best. If Snehana is not proper, the proper Snehana you will do, woman will be the smooth and easy. If Snehana is not done properly, then it is difficult to go for any means Vamana or Virechana. It's difficult. So always
focus on snehapan, proper snehapan, right? So that's the thing. Then after, yeah, स्नेह पान के लिए मध्य पाप का स्नेह यूज करने के लिए बोला। बिल्कुल। तो जो आज से स्नेह रहता है वो पाप पाप नहीं किया हुआ है। वो एक्चुअली स्नेहपान के लिए, आभ्यंतर स्नेहन के लिए, आभ्यंतर स्नेहपान या शोधनार्थ स्नेह इसके लिए नहीं। आप उसको मूर्छित करके दीजिए ना, मूर्छना करना है, that's all। तो अच्छा सर अकॉर्डिंग टू अच्छा स्नेह का इस मूर्छ करने का मूर्छ है कर सकते हैं, आप दे सकते हैं, हम तो अच्छी भी देते हैं, प्योर विदाउट एनी शोधन, बिकॉज घृत को क्या मूर्छित ना करना है, आपने इतना अग्नि से वो किया है, उसमें क्या आम है, वाई यू आर डूइंग मूर्छना, आम दोष पाचन, राइट। ये यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता था, बट व्हेन आई टेक अबाउट स्नेह, क्लास अबाउट स्नेह ना, मैं ये चर्चा करता हूँ। वाई घृत तेल वसायन मज्जा, वाई नॉट अदर स्नेह, हम मक्खन से स्नेह नहीं करवा सकते, विथ बटर cannot we cannot go for a sneha, why not? Somebody says यार मुझे चीज़ अच्छा लगता है, इसलिए तो है ही है, आप कहो इतना खा जाऊंगा। Should we go with butter or cheese for sneha? और ठीक है ना, वो आप मैक्सिमम स्निग्धता वो कंटेन करते हैं, तो वो ये 500 ml घी देना है तो वो 750 ml बटर दे देना। बटर का तो थोड़ा बहुत तो हुआ है संस्कार। Should we? No. It's an interpretation. Whatever you are telling, it's a one interpretation. Agreed. One school interpreting that way, but exactly it is not mentioned anywhere in the classics. We are making a lot many interpretation in between lines without any proof, right? चरक ने क्या कहा है? So, आभ्यंतर स्नेहपान के लिए क्या देने को कहा है? Give me the reference. काल इज वी आर नॉट डिस्कसिंग, मैं आपके उस पर भी आता हूँ, बट आई वॉज डिस्कसिंग वेदर वी शुड गिव बटर और चीज। ऑब्वियसली घी भी हम वही करते हैं, वो तो इफ यू कम टू द नॉर्थ, द्रव स्वभाव इज नॉट देयर इन द समर विंटर। अरे अंदर तो यार 37 डिग्री है, वो कैसे रहेगा ऐसे? कैसे चेंज तो होगा ना, अंदर जाके तो वो ऐसे सॉलिड रह ही नहीं सकता। प्रोसेस में आवरण क्रिएट करेगा, उसमें सूक्ष्मत्व इतना नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? गोइंग इन राइट डायरेक्शन। श्रेष्ठ ने इसीलिए कहा है कि उसमें कोई और निश्चितता तो लाता है और सेलुलर लेवल तक में पहुंच जाता है, बाकी कोई भी चीज़ बटर वहाँ तक पहुंच नहीं सकता। स्रोतस में ही बीच में कहीं ना, जैसे हम चीज़ भी खाते तो मुंह में सब जगह चिपक जाता है, तो अंदर तक नहीं जाता है। ये पिछलता जो है, उसमें जो चिपकने का गुण आता है, वो कैसे आता है? एक्चुअली आप अगर बटर को गर्म करेंगे तो क्या होगा? इफ यू विल बॉयल इट, व्हाट विल हैपन? It will convert it into ghee and some casing, right? Will be the residue. आप चीज़ को गर्म कर लो या आप किसी भी ऐसे स्नेक को गर्म कर लो, होगा। If you will boil ghee, what will happen? नहीं, उसको उबालते रहो up to the boiling point. What will happen? Evaporate, उड़ जाएगा। ऑयल को गर्म करोगे क्या होगा? उड़ जाएगा। Same thing with vasa and majja. There will be no residue. It itself is niram. There is nothing. It's a pure form of the fat.
उसको आपको मूर्छना करने की ज़रूरत नहीं है। मूर्छना इसलिए करते हैं कि समटाइम इट हेल्प्स इन द डाइजेशन, इजीली वो हो सकता है थोड़ा और लाइट बन जाता है वो ड्रग्स आने से, अदरवाइज इजी एब्जॉर्ब हो उसके लिए। बट इफ़ यू हैव डन प्रॉपर दीपन पाचन देन देयर इज नो इशू, आप उसको गर्म करके देते हैं, वर्क्स परफेक्टली, राइट। सो दैट इज देयर। सो आपने वो दिया, इसलिए हम तेल वसा मज्जा देते हैं, एंड आइडियली घृत इज गिवन। देन आपने स्नेहपान किया, 7 दिन किया, 6 दिन किया, वॉट एवर, देन one day there will be a gap. Next. So Sweda in 1 day gap. Then kapha increasing food, sarvangabhyam in the morning and bashpasva. कफा इंक्रीजिंग फूड क्यों देते हैं? तो स्नेहन से भी तो हुआ है। You are right, actually it's for kapha clash, but it is believed that if you will give a 1 day gap, this is the only reason in Virechan they have given 3 days and in Vaman it's for 1 day. इसमें मिस श्लेष्म का आधिक्य चाहिए in Vaman, and in Virechan you need a मंद कफा, right? So there is a 3 days. इसमें एक दिन में भी आचार्यों को लगा कि if even 1 day even there are chances कि there will be मंद कफ, थोड़ा कम हो जाएगा तो देन वो बढ़िया वमन नहीं होगा, वो कफ जो है वो थोड़ा सा जम सकता है, मीन्स सॉलिडिफिकेशन होगा, देन देयर विल बी नॉट गुड वमन। सो दैट्स व्हाई दे हैव टोल्ड दैट ऑन द प्रीवियस डे यू शुड गिव अ डाइट व्हिच प्रोवोकेट्स कफ, सो आपको लिक्विड कफ मिलेगा और इजीली वमन होगा। सो प्रीवियस नाइट यू विल गिव द नेक्स्ट उत्क्लेशन विथ ग्राम्य औदिक और अनुप्रस फॉर वमन 1 day एंड फूड फॉर विरेचन, वो आप सब जानते हैं, वी वॉन्ट डिस्कस। देन द पेशेंट विल गो टू द बेड एट टाइम एंड द नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock you have to wake him up, and by attending all the vegas and all that things he has to come to the theatre. Now when waman should be done, what should be the kala in the day? Kapha kala. So what time it should be done? Shleshma kale, morning, right? If I say that I do not wake up early in the morning, usually I have a habit to wake up at 9 o'clock, and I know little bit Ayurveda, so I say there is a kapha kala in the evening also, isn't it? So I want to do waman in the evening. What will you do? कर देंगे? क्यों नहीं करेंगे? कफकाल तो शाम को भी है, हमें कफकाल में करना है ना, we have to do it in the कफकाल है, waman है। Why we want to do that thing in the evening? अरे थोड़ा सोचो यार, कुछ तो रात्रि की शुरुआत है तो फोकस बंद हो जाता है, मतलब पूरा बाहर नहीं निकल पाता है दोष, तो शाम को मात का प्रकोप रहता है, उसके बाद में रात्रि की तो वो शुरुआत तो सुबह भी ऐसा ही है, लास्ट फेज ऑफ द नाइट इज अ वास्ट एंड देन देयर इज अ कफ। 6-7 बजे करते तक दिन की शुरुआत होती है, तो ठीक है, उसमें रात की शुरुआत है, क्या फर्क पड़ता है? तो मतलब एक तो प्रसन्न रहते हैं सर, सुबह सुबह उठ के किसी भी काम में मन लगता है, साइकोलॉजिकली If patient is there in the हाँ psychological थोड़ा benefit हो सकता है, but that we can do counseling and all that things, and if patient is admitted in your hospital with a good environment and all that things, patient is happy even in the evening, वो कहाँ ऑफिस में जाके किसी बॉस से झंझट करके आने वाला है, तो वो दुखी होगा।
there, you know, मैंने जब सबसे पहले वमन पे काम करना शुरू किया, this thing actually, you know, excited me कि ऐसा भी आचार्यों ने सोचा होगा, और उसके बाद मुझे पंचकर्म में ज़्यादा डीप जाने की, at that time पंचकर्म was not a separate specialty when I started this thing. Tai Chikitsa and Panchakarma were together. With this work, one scholar, Dr. Sachin, we are going to discuss the things later on. मुझे जिसको कहते हैं ना, I got the inspiration to poke in that something very scientific is there in this woman, Virechan and Basti and all that things, and till date I am working on that. What we found is, you know, actually it has something to do with the action of woman and effect of the woman. You know about cortisol? Cortisol, right? So what is the maximum level of the cortisol in the blood in the daytime when it is? Do you have idea? In the morning it is In the morning. Maximum up to the 20 or even more, 20 microgram per liter, right? And in the evening it is minimum, means around 5. Now, when you give woman, what happens? Woman में आप क्या करते हैं? आपने दवाई पिलाया और फिर सब निकाला बाहर, right? So ultimately what you did the insult to the local mucous membrane. Almost जो आपका कफ निकला, mucus निकला, what's it? जो म्यूकस आप समझते हैं वो क्या आया एक्चुअली? क्या वहाँ चारों ओर से आके कफ बैठ गया था कि भाई हर बॉडी से आके वो कफ म्यूकस जिसको आप वही कफ है क्या, वो आके बैठ गया था वहाँ? क्या हुआ? What's coming out? It's nothing. It's the outer layer of the mucous membrane of the stomach which is coming out during woman, right? तो इसीलिए आपको ये उष्ण तीक्ष्ण औषधों की जरूरत है. So that's coming out by the scrubbing. Now when it comes out, outer layer of the mucous membrane, once you are removing, what will be the condition there? Stomach की condition क्या होगी? Physiologically, you think there will be inflammation, right? Inflammation होगा तो क्या होगा? डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव होगा आपके बॉडी में, एंड टू रिपेयर दैट व्हाट विल हैपन इन द बॉडी? Secretion of the cortisol. Cortisol level will be increased in your blood, in the body, and that will rush toward that area to repair, right? WBC count will increase and all that things will happen. Of course, you know that theory that increases the permeability of the local capillary disintegration, and it allows the toxic material to come out in the stomach, which usually do not come out due to this increased permeability, right? So that will be there. Now already 20 microgram cortisol is there in the blood, and you are increasing more by inducing the stress in the body. Actually, all the Panchakarma procedures, the mechanism is basically to increase the stress in the body, induce stress in controlled way. That is not the topic of the discussion today. Sometime we will meet somewhere, we will discuss. But it's the whole purpose is to induce a controlled way stress in the body, which works like a magic. So this cortisol will be secreted, and that may be the reason that already cortisol level is high. You again secreted the cortisol much more, and maybe going up to the therapeutic level, which is
having an effect on the disease, where the woman is indicated, asthma, all the skin disease. On the skin disease, what is the treatment in the modern science? What they give? Only steroid, they don't have anything, external or internal, whatever. Right? Even in the Pandu, it has been told Tikshna Vamana. And Tikshna Vamana means the more Tikshna, more level of cortisol is increased, and that means help in the the hematopoiesis. So that may be the reason. और ये जब मुझे means when this we after every woman we measured this cortisol level, it goes up to 40, 60, and in Kushta they have told, when I was studying it was difficult for me to digest, what is the treatment of the Kushta they have told? Pakshat Chhadan. मुझे ये समझ में नहीं आता था कि every 15 days आप छर्दन करेंगे, वो जाएगा कहाँ? How it is possible? हम क्यों मार डालेंगे उसको? तब मुझे ऐसा लगता था. But this may be the reason that पक्षात छर्दन कि बॉडी में ऐसे सिक्रेशंस को फैसिलिटेट करता है कि अपने आप को उसको रिपेयर करता है. So that's why the reason may be that it is given in the morning, early in the morning, right? Next. Then preparation of common medicine, Madanpan Pippali, Yasti Madhu, Vacha, Madhu and Sedna. Next. Pippali 6 to 10 gram depends on the potency and depends on the cost of the patient and bal of the vyadhi, and everything should be in that proportion. Right? Mixing in order is all the time. You need not to give milk. If patient is having a good willpower, without milk you can give with honey only. Right? Next. And this Madanpal Pippali, as they have given today, means without any sanskar, or you can do with the sanskar also, means buy it with dahi or greet or madhu and then dried in chhav mein sukha ke. You can mix it, powder it and pack it in, and you can give that also. It is more effective. It is if it is collected in the proper season between Vasant and Grishma, and then put it in the gomay and वो सब प्रोसीजर करके आपने उसको धान्य में रखा एंड किया तो शायद इफेक्ट अच्छा हो सकता है. वी हैव नॉट डन दैट पर्टिकुलर स्टडी कि उसका अच्छा असर होता है कि नहीं, पर प्रोसेस तो काफ़ी लंबी है. उसमें काम हमारा चल जाता है सिंपल बदल से भी, इसलिए पीपल डोंट गो फॉर दैट. Why sandal and honey are there? Kapha Vilay. Sir, I read in the internet. जो मदन फल होता है वो सैपोनिक है. उसकी जो एक्टिविटी है कभी-कभी वो न्यूरोलाइसिस करता है. लवण जो है उसको काउंटर पार्ट करता है. इसलिए मे बी द रीजन कि लवण उसमें डाला जाता है. Very good. Thank you for sharing. We may think in that direction also, that why actually So many types of saponin, but yeah, saponin is there. That's right. So many things are interwoven in the Ayurveda that even the today's science, with help of the today's science, it's difficult to understand. I think when the science will develop, we will be able to understand properly. Up to that level, they have thought about all these things. So then the Vamanopag, Yasti Madhu, or sugarcane, or hot decoction, or somebody was asking me when we were doing Vaman, that sir, I think Viraj was asking that whether we should give a Madanpal Yog between the Akanthapan or it should be given after Akanthapan. Actually, many people have a practice that they give the Vaman Yog between the Akanthapan also. Means third, fourth of the material they have given. Then they will give the material, means the drug, Madanpal and all that things. So
it will get more time to act, and then again 1/4 Akanpan they will finish. But ideally, means we don't give, whenever there is Akanpan, then only we give it to leak, because sometimes Akanpan होने से पहले ही patient शुरू कर देता है to give the drug. If patient has a strong disliking towards the drug, तो फिर वो शुरू हो जाएगा. So ideally it should be given after Akanpan. And we have tried many adjuvants, means for Akanpan, Issuras, milk, DST Modulfant and all that things. But milk is the best by everyone. Another question somebody was asking to me that Yavagu, when we were giving in the morning, whether it should be given or not. In classics it has been said that it should be given. Ideally, why Yavagu is given? For utkleshon of kapha. Yes, and that was the pyloric end, right? Something you give, तो जैसे कुछ आपने खाना खाया तो pyloric end close होगा, that's why they are giving. But if you use milk, again it's a आहार द्रव्य, right? वो देंगे तो आपको यवागु देने की जरूरत नहीं है, या मिल्क से काम चल जाता है. Actually it is said in the classics that a woman should not be given empty stomach. That is the purpose. You should give a yavagu, or you can even give a grit. Grit भी दे सकते हैं, या yavagu में grit मिला के दे सकते हैं, juice भी दे सकते हैं, anything. But you should not give a woman empty stomach. Otherwise वो रक्त चंद्रिका आने की संभावना होगी. Right? That's why. But if you are giving milk, then you need not to give anything. It's okay. So milk is the best, and most of the people like to ingest the milk. Most of the people. So the best thing, next best thing we experienced is Yestimulifant. If patient is not ready for the milk, go for Yestimulifant, and you will have a good woman, effortless woman. Means minimum strain to the patient and good woman. All other material like Nimbajal Quar or even alcohol or Ixurus थोड़ा मुश्किल होता है, पेशेंट को कष्ट ज़्यादा होता है. So better to stick with these two things. Yeah. जब हम करवाते थे आकलन, और इसमें भी ज़्यादातर हमारा ये मार्किंग होता था कि जब हम एक्सपीरियंस करवाते थे तो एक थी आइसोटोनिक सॉल्यूशन. इवन जो मिल्क वगैरह देते हैं वो भी थोड़ा सा आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो सीएफ को जो है उसको टुवर्ड्स द स्टमक लाने में हेल्प करता है. और जब आप एक्सपीरियंस देते हैं तो पेरिफेरली ज़्यादा होता है, तो कभी कभी पेशेंट को चक्कर और ये सब आती है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और बहुत ही कॉन्फिडेंट टुवर्ड्स द स्टमक. दैट्स व्हाई आई एम Akanpan also creating the isotonic solution at the level of the stomach. I didn't understand what you want to convey. आप हिंदी में बोलिए ना कोई बात नहीं. सर आपने ऐसे गुजराती में बात करते हैं. No, it's everybody should understand. Tell in Hindi. सर जब हम लोग को मिल्क देते हैं और एक्सोरस भी हम लोग काफ़ी बार देते हैं, तो एक्सोरस जो है वो स्टमक में एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन जैसा क्रिएट करता था. उसकी वजह से जो फ्लूइड जो है वो सब स्टमक की तरफ जाता था. तो कभी कभी क्या पेशेंट को गिडीनेस वगैरह फील होती थी, चक्कर आ जाता है, क्योंकि वो उसका फिर बीपी वगैरह डिक्रीज हो रहा है. पेरिफेरल जो ब्लड सर्कुलेशन वो डिक्रीज होता है, सेंट्रली ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ता है. तो ये भी हो सकता है कि आकनपान का एक रोल ये भी होता है कि टुवर्ड्स द स्टमक जो सर्कुलेशन जो है थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन मिल्क में वो नहीं दिखा जाता था. कभी मिल्क में ये प्रॉब्लम नहीं होती. इंश्योरेंस ऐसा होता था ज़्यादा. एक्चुअली अच्छी बात है अगर होता है तो दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट. एक्चुअली our whole purpose of this exercise is to increase the blood flow towards the stomach. एक्सरसाइज ही पूरी इसके लिए है. सो इट्स अ गुड थिंग इफ इट इज हैपनिंग. एंड ब्लड प्रेशर तो अब होना ही होना है, इट्स वेरी कॉमन. बट एट द एंड ऑफ द वमन इट विल कम टू द नॉर्मल. सर एक बात इसमें श्लोक है, इसमें लिखा है कि बाल व्यू सुकुमार इनको ये शीर विधि उसको ऐसा देने के लिए, यानी जो स्ट्रांग है तो उनको कुछ देना नहीं है सर. उसका मतलब
हाँ बिल्कुल, एक्चुअली देयर आर लॉट मैनी ऑप्शंस दे हैव गिवन। बाल सुकुमार के लिए तो जैसे ये सब आपने जो कहा उसका उन्होंने देने को कहा है, बट देन द इफेक्ट विल आल्सो बी नॉट द सेम। आप ऑप्शन यूज़ करते हैं, जैसे आइडियली आपको दौड़ के जाना चाहिए और आप दौड़ नहीं सकते, तो फिर आप थोड़ा सा तेज़ चाल करके जाइए, वो तो पहुंच तो जाएंगे बट देयर विल बी डिफरेंट। सो दैट इज़ देयर, वो आप लॉजिकली यू कैन गिव ऑल दैट थिंग्स, आपको वमन करवाना ही है, ऐसी सिचुएशन है तो यू जस्ट नीड टू फैसिलिटेट दैट। पर बाल, भीरू, वृद्ध, इन सब में व्हेन यू विल गो फॉर वमन कि आउटमोस्ट नेसेसरी मीन्स देयर इज नो ऑप्शन, यू हैव टू गो फॉर वमन, तो वहाँ तो क्या हाल है कि दोष निकलने को तैयार बैठे हैं, यू जस्ट हैव टू ट्रिगर इट एंड इट विल कम आउट, यू हैव टू फैसिलिटेट इट, दैट्स ऑल। सो वहाँ वो यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट इज़ देयर। तो आपने आकंठपान करवाया एंड आकंठपान करवा के आपने मटेरियल पिलाया, श्लोक बोल के आपने काउंसलिंग किया, एंड काउंसलिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड ऑल द टाइम थ्रू आउट द वमन यू हैव टू डू गुड काउंसलिंग। एंड आकंठपान जैसे आज जो दोनों पेशेंट में हो रहा था कि दो स्नेहपान वॉज गुड एंड एवरीथिंग वॉज दैट, बट दे वर अंडर लिटिल बिट स्ट्रेस, क्योंकि इतने सारे लोग थे, है ना, सो दे वर लिटिल बिट स्ट्रेस था। उनको जितना अच्छा काउंसलिंग होगा और वो रिलैक्स रहेंगे उतना अच्छा वो होगा। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट फिजिशियन ऑल द टाइम काउंसलिंग में, नहीं बढ़िया होगा, ये अच्छा है, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। In the classics, all the acharya have anonymously told that give assurance to the patient कि हम आपके भले के लिए कह रहे हैं, आपका अच्छा हो जाएगा, आपका डिसीज ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। Because woman, as far as the Panchakarma is concerned, most complicated, most difficult process, और उसमें एक्सपर्टाइज आपकी अगर आ गई तो फिर तो बाकी सब कर्म तो आप नहीं कर लेंगे, है ना। तो वमन, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है, मैं डराना नहीं चाहता आपको, ऐसा वमन से भागना नहीं कि नहीं यार वमन को कहाँ छुएंगे, बट केयरफुली एंड उसको ठीक से हैंडल करिए तो इट्स अ गुड थिंग। सो दैट विल बी डन। आपने प्रदान कर्मों में आ गए हैं वो आपके ऊपर है ना, पेशेंट को अगेन इट्स अप टू फिजिशियन। रक्त चंद्रिका आई तो आप कह सकते हो ना, थोड़ा बहुत वो गड़बड़ होगा, वो निकल गया, आप कुछ भी कह सकते हो। इट्स अप टू यू व्हाट टू, उसको क्या गोली पिलाना है वो आपको देखना है ना, वो पेशेंट को कहाँ पता है। हाँ, अगर पेशेंट एमडी स्कॉलर को बिठाया है वमन करने, देन प्रॉब्लम। पर उसको फिर आप समझा सकते हो कि यार आता है तो मैं उसके लिए नहीं, उसके लिए दूसरा रास्ता है ना। इफ यू आर एक्सपीरियंस, अरे मेरे को एक्सपीरियंस है, डोंट वरी, इतना तो आता है, उससे कुछ नहीं होता, गिव एश्योरेंस, और सही में कुछ नहीं होता। हम लोग मीन्स इन माई प्लेस इन जामनगर 96%, आई एम, शायद मैं कम बोल रहा हूँ कि एक आध दो छूटते होंगे, बाकी ऑलमोस्ट इन ऑल द पेशेंट वी अचीव पित्तांत। उसको कैसे भी करके हम पित्तांत ले आते हैं। थोड़ा उसका मीन्स सत्व कम हो तो हमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी गो फॉर अ पित्तांत, बिकॉज अनलेस अनटिल यू गेट द पित्तांत, आपका जो पर्पस है वो सर्व नहीं होता। पित्तांत होता है, वाई इट्स टोल्ड पित्तांत, पित्तांत क्यों अचीव करना है। हाँ, इट्स सिंपल। कब पूरा निकल गया, पित्त कब आएगा। अब पित्तांत हैज बीन टोल्ड एज अ नो आंतिकी, राइट। आंतिकी मीन्स एंड पॉइंट मीन्स you should stop there. Why it is so? पित्त निकला फिर भी आपने वमन चालू रखा तो
बात आएगा तो आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, क्या होगा? प्रैक्टिकली एनीबडी हैज वेंट बियॉन्ड पित्तांत, गया है कोई? जाएंगे तो क्या होगा? लॉजिकली सिंपल, पित्त का आना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पित्त इज कमिंग आउट, दैट मीन्स व्हाट? Bile is coming out. Bile, from where bile comes? Duodenum. Means आपका pyloric end open हो गया, आपका stomach पूरा खाली हो गया. All the outer layer of the mucous membrane has been removed, scrapped, and it's empty, and the duodenum pyloric end has been opened, and it's something is coming out. And then even if you will continue, तो फिर तो capillaries rupture होना शुरू होंगे. It's obvious. That's why they have told कि भाई रुक जाओ, पित्त आ गया, खत्म हो गया. So that's why they have told that pittant should be there. Right? So आपने वो दिया, then you will wait for one muhurt and wave will start. Usually एक मुहूर्त तक रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि if you will wait for one muhurt, ज़्यादातर it goes down, and there are chances of Vaman and Virejan both. So ideally you should wait for 20 to 30 minutes maximum, and then if within 20 to 30 minutes it does not comes out, then start the external efforts with irritating the palate, whatever way you whatever approach you have, you can go for that. So that should be done. Then again there are two types of woman practices. One is the classical one, जिसमें ये कहा है कि once there is akanthapan, then you give medicine and then wait for one more, and once woman starts, you need not to give anything, just observe whatever comes, you just facilitate the patient, parshvagraha and all the things, and lalat patigraha and everything you do, and then just facilitate patient, and whatever veda comes you observe. That is the one method. And another method which traditionally we are using, that पिलाते रहो, निकालता रहे until pittant is achieved. With both the methods we have done Vamana. We will discuss later about that study. Next. So after आपने वो निकलना शुरू हुआ, पित्तांत हो गया, and then you will give the sandaujan at the last, and then whatever the remaining is coming, that will come out, and then you will go for a dhumpa, right, to remove the kapha from the mouth, and then subsequently next dhumpan with haridra, yava and devdaru. Mix it with ghee, घृत, and make a varti. एक आपके पास पलाश पत्र हो या दंडिका हो और whatever, कुछ ना हो तो you put it on the paper and उसको जलाओ and inhale it from the nostrils and bring it from the mouth. That's the way धूमपान has to be done. इसमें भी बीच में किसी को कोई क्वेश्चन है वमन में, प्रोसीजर में? No, definitely I will focus on this. ये आपके सेपोनिन वाले मुद्दे पे कि सेपोनिन क्या, what it is playing role in the woman particularly, क्योंकि बस्ती में तो उसका रोल है. Madan phal is being is there in the basti, and the saponin plays an important role. But as far as the woman is concerned, what is the role that I'll poke in. So that is that. बाकी किसी को प्रोसीजर में कुछ क्वेश्चन है? No. Next.
So assessment of Samyak woman. What are the parameters? Go ahead. Antiki, Legiki, Vegiki and Maniki criteria. Next. We already discussed its end point. Next. Vegiki. These also you know. Avarama, Pratyam, Madhyam, Pravar should be next. Maniki Shuddhi also you know. Next. And Lengiki based on Lakshana next. And these are the Samyak Shuddhi Lakshana. There are two types of Lakshana. Immediately you achieve and after some time you achieve. So these are the immediate Lakshana. With Parshva Urdendriya Marg Shuddha. Next. Now we will come to the point. Morning some people were asking a question, how we will measure Vega, what you will consider as Upavega. So we conducted a study in it was started in the 2000, so 2001, 2002 we conducted this study. And I think Dr. Vasant Patil has mentioned in his book also this study. We worked on all these four criteria, Antiki, Maniki, Vegiki and Lengiki. We wanted to standardize the criteria, how we will assess. Next. What is the meaning, means why this all four criteria? ऐसा नहीं हो सकता एक ही होता तो काम नहीं चल जाता सिर्फ लैंगिकी. When the Acharya says that the Lengiki is the final, if Lengiki, whatever the purpose you have done Vamana, suppose you have done Vamana to treat psoriasis and if psoriasis is cured, that means it's a good Vamana. Then why all these parameters? Why they didn't say that only Lengiki is there, why all four? So these are the purpose, different purpose. Antiki criteria is for to decide end point. As we discussed कि अगर हमें Antiki criteria नहीं पता है कि पित्तांत होने पर रुक जाना है, that's why they have given particular word Antiki. अगर ICMR वाले कहेंगे कि end point तो scientific होता है, अगर हम Antiki बोलते हैं तो जरा हमें scientific नहीं लगता, but it's a pure scientific thing. So to decide end point, then Maniki. Maniki का क्या मतलब है? To quantify doshas, how much quantity of doshas are expelled. उससे क्या होगा? आपने तय कर लिया कि कितने दोष निकल आए हैं, तो उससे क्या होगा? What is the purpose? To understand the Shuddhi. Yeah, that's fine. All four criteria are for Shuddhi. But particularly Maniki Shuddhi, what is the purpose? What is the intention? You decide Avar, you decide Pravar or Madhyam. If there is a Madhyam Shuddhi, Maniki Shuddhi, then what will be the interpretation? Because whatever Vishesh doshas are that should be classified. So for example, if in very Avara Shuddhi, immediately we will need to start medication. If Pravar Shuddhi is there, then? No. Actually, classics is very much clearly told. Pravara Shuddhi means you need to give a strong medicine. Means dosha or Maniki Shuddhi particularly. Lot of doshas were there, means the severity of disease was more, and so you give a strong medicine for longer time. If there is a madhyam, the dosha prakop was medium time. So you should give a medicine which is not that much strong, it will work. And if our Shuddhi means dosha has come in less quantity, that means that much visheshan was not there. So that is the interpretation. So on the basis of the Maniki Shuddhi, you will decide the dose and duration of the drugs and type of the drugs, selection of the drugs. Next please. Sorry. And the Vegiki. So, Vegiki is for what? If there are 4 Vegas, 6 Vegas and 8 Vegas, what will be the difference?
Means on that basis what you will decide? Hmm? Yes, Like in case of our we go for 3 days of sunset. that's nice. 5 days. Excellent, thank you. So on the basis of the Vaigiki Shuddhi, you will decide the Samsarjana Krama, that whether you will give for 3 days or 5 days or 7 days. Why it is so? If there are 4 Vegas, you will give for 3 days only. Why it is so? It's simple. Less Veda means what and more Vedas means what? As I told earlier, you are living. No, dosha visheshan is something else. This shuddhi means in terms of Veda it's something else. When more Veda are there means you have a insulted local mucous membrane more. So more inflammation. Less Vega means local mucous membrane you are inserted comparatively less. So less inflammation comparatively. So if there is a more inflammation, you have to give more time to recover it. And that's why if there are proper Shuddhi in terms of Vaigiki, then you have to go for a 7 days Samsarjan Krama. If it is Madhyam, then within 5 days it will recoup. And if it is over, within 3 days it will recoup. That is the purpose. And Laigiki, you know very well to assess the clinical effect. Now, as far as the Vaigiki criteria is there, again the basic question of the morning. किसको वेग कहेंगे, किसको उपवेग कहेंगे, right? Now the bowel collected in the bowel after effortless expulsion is termed vega, and it means what is the upavega? It means nearer to vega, lesser in every aspect than the vega, right? अगर मोटे तौर पे मैं कहूँ means in the rough aspect I say, if vomitus comes out, means bout comes out effortlessly with projectile, vomiting, means just like somebody has opened a tap immediately और जोर से पानी जैसे आता है ना, पंप या मोटर चालू किया और कैसे फोर्स से, that when it comes it is a vega और बाकी सब उपवेग है. But we have to try to put it in the boundaries. Next week. So we decided 3 criteria: quantity, force and duration for the assessment of vega. Next please. Quantity. During the vega it is expected the dosha should be emitted out mixed with medicine administered in the glass before. So suppose we are giving the 350 ml in one glass. So at least जो वेग आता है, at least it should be more than that. Then only we can say कुछ दोष भी लेके आया है. Next. Then force. Vega requires much more force than Vega to come out. So special score pattern was set up to analyze before, for each bout. If the vomitus, mostly the drug taken, spilled out through the mouth or oropharyngeal region. जैसे today on this side, which lady means on the right side, the old lady was sitting. She'll just drink and will throw out. Means it won't go up to the stomach even. From the esophagus or oropharyngeal region, it will come out. So it's a upavega. It cannot be a vega. वो दोष तो आना ही नहीं है उसमें, सवाल ही नहीं उठता. So it was given a score 1+. The vomitus coming out through the esophageal region due to strong antiperistaltic movement. Once you have given the drugs, there will be antiperistaltic movement in the stomach. Due to that also many things comes out. जो हम उपवेग कहते हैं वो उसको जैसे नोसिया शुरू एक बार हो गया तो रुकता नहीं, आता रहता है थोड़ा थोड़ा. So that is also not a vega. And so it was given the score 2. The vomitus coming out through the region of the stomach
पेट से निकल रहा है, पूरा वो झुक के यहाँ से आ रहा है, आपको पता चलेगा, पेशेंट को भी पता चलेगा कि इट्स कमिंग फ्रॉम द स्टमक एंड प्रोजेक्टाइल. So that is considered as a 3+. And projectile vomiting with great force or vomiters returning from the duodenum, नाभि से उठ के आ रहा है जैसे, if that is there then it was given grade 4. Next please. And the duration, sometimes patient expel lesser quantity, less than 350 ml, which is coming out from the stomach or duodenum, but takes much more time than the normal average. ज़्यादा टाइम लेके वेग आता है तो यूजुअली इट इज़ फ्रॉम द स्टमक, और पिया और तुरंत निकल जाता है तो इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम द स्टमक, एज अर्ली मॉर्निंग टुडे मॉर्निंग हैपनिंग विद another patient. So you have to consider all these three, means quantity, force and time. Next please. So nomenclature by using bout index, that is QFT pattern. Bout should fulfill any of these two or all three criteria to be called as Vega. If bout coming with 450 ml quickly, तो वो वेग है. उपवेग, bout fulfilling only one of these criteria or mainly having the force 1+ or 2+ can be claimed as a upavega. Next. So this was the pattern defined, means QFT pattern. So it's quantity of the vomiters. It was given the score, अगर 350 से कम है तो it was 0, it is more than 350 it was 1. Then force, if having a grade, जो हमने पहले earlier we discussed the grade of the force. If it is 1+ or 2+, it's 0. Having grades 3+ or 4+, so 1. And time taken to emit the bout, it is less than 6 seconds, it was given 0. If it is more than 6 seconds, it was given 1. Next. So on the basis of the score, Q plus F plus T, and if that is 2 equal to 2 or more than 2, then it is a Vega. If it is less than 2, means 1, then it is Upavega. So these are the things we try to standardize. और ये अभी शायद हमको इसका बहुत उपयोग न लगे, महत्व न लगे, but last week I visited one hospital in Bangalore. I think there is one, they have one branch in Kochi also, Ayurved. You might have heard about Ayurved. Ayurved, BAID, right? It is a pure Ayurvedic hospital run by the mechanical engineer and MBA guy, and he is hiring the physician and running the hospital. But one thing I learned from that hospital, he has an NABH. आयुर्वेद में शायद very rare किसी के पास, शायद उसके पास ही पहला है NABH, that gives the accreditation to the hospital, NABH, right? So Ayurved hospital with the NABH accreditation, and he is registered with all the insurance company. It's acceptable with all the insurance company for the treatment reimbursement. And that's why he asked me a question that, sir, what do you think? I was there for, means they are going to have MOU with our university. I was there for the inspection. So he was telling me that, sir, what do you think what we are charging for a day, 1 day to the patient? I told maximum 1,000, 1,500, maximum 2,000, what you will charge? He said at least 5,000 a day we are charging to the patient. Of course, अगर patient को जेब से देना है तो वो नहीं चलेगा, because they are in the IT city and all IT people have insurance, so they are coming there, they are earning like anything. But how come it happened? Insurance वालों ने उनको क्यों दिया? आप मांगो, अमृता में से ट्रीटमेंट लेके गया है या इवन हमारे जामनगर से भी लेके गया है, तो बहुत सारे इफ एंड बट लगाएंगे, बहुत प्रेशर होगा तो लिटिल बिट दे विल गिव. एंड व्हाई दे आर गिविंग देम टू देम? उन्होंने each and every procedure they are doing, they have tried to record it and उसको सब ऑब्जेक्टिविटी देने की कोशिश करी. एवरीथिंग
मीन्स इट सीम्स साइंटिफिक। उन्होंने मान लो कि किसी को वमन करवाना है तो ऐसा नहीं सीधा उन्होंने लिख दिया कि वमन, फिजिशियन ने लिख दिया। फर्स्ट प्राइमरी फिजिशियन विल असेस, he will do all the examination, then it will come to the senior physician, he will do, then there are some list they have made. If these things are found, then he will be advised for Shodhana. For Shodhana, if these things are there, then he will advise for the Vamana or advise for the Virechana. It's very systematic way. And he was aware about why this work. That's sir, we want more this kind of work, so we can say कि भाई उनका पर्पस ये था कि why patient was kept for 3 days or 7 days in the hospital. वमन के बाद आपने 7 दिन रखा, क्यों रखा? वेग आपने कह दिया कि 7 आया, कैसे आया? डू यू हैव एनी मेजर? कुछ आपका पास है? ऐसा थोड़ी कि मैंने बोल दिया कि भाई इसको 7 आया और 7 दिन रखो। दैट इज द कंसर्न ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, और वो आने वाला है, बिकॉज मॉडर्न साइंस जिनकी सोच, whose thinking is according to modern science, they won't accept हम कहें कि नहीं physician will decide. Is it so? Because in 90% of the things, 90% I think मैं 90 भी लिबरली बोल रहा हूँ, 95% केस अल्टीमेटली बात कहाँ से आके रुकेगी आयुर्वेद में? फिजिशियन विल से, बहुत आप दिल्ली में जाओगे तो बोलेंगे कि वयम देशम देश दोष साथ में वो सब के हम तय करते हैं। अरे उसमें तो चरक भी कह के गया कि मैं भी नहीं सोच पाता, ज़्यादा सोचता हूँ तो अल्टीमेटली नोबडी कैन डिसाइड ऑल दिस थिंग्स। चरक ने लास्ट में बोल दिया ये सब लिखने के बाद कि दो आई एम टेलिंग ऑल दिस फैक्टर, बट ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर इट्स डिफिकल्ट टू डिसाइड ऑल दैट थिंग्स। बट वी हैव टू कहीं तो हमको बंधना होगा और बांधना होगा। इफ यू हैव वी हैव टू सर्वाइव इन द सोसाइटी। Why we are listening a lot that Chinese system of medicine is coming up in the global market and we are lagging a lot, means they have a 35% share in the global market and we are having less than 2%. Though we are stronger than the Chinese system of medicine, but why this is happening? We are missing these things. हम ये करके नहीं देते। हमारे वहाँ हमारा अप्रोच क्या है? सीखना है वो आएगा आयुर्वेद, आयुर्वेद में तो है वो है, करा दिया शाश्वत, इतना अच्छा साइंस है, हमें क्या कहने की जरूरत है। राजस्थान से एक वैद्य थे, उनके पास एक फॉरेनर गया सीखने के लिए आयुर्वेद, एंड दैट वैद्य वाज नॉट वेल वर्स्ड विद इंग्लिश, सो ही वेंट देयर सम विद इंटरप्रेटर, मीन्स आयुर्वेद वाला ही कोई था। And then he told that I have heard lots sir about you, means you are having a very good practice. So what charge you will take and how many days I have to stay for the learning of Ayurveda? What was the answer of that Vaidya? अरे इसके लिए तो आपको हिंदुस्तान में जन्म लेना पड़ेगा और द्विज संस्कार करने पड़ेंगे, उसके बाद आप वेद को सीखने के लिए लायक होंगे। वो इंटरप्रेटर वाज वो भी बोले, he was in the dilemma what I should give the answer to that guy. So then anyhow we managed, no it's not possible, ये वो करके उसको समझा के भगा दिया। But if that attitude will be there, तो कहाँ से आयुर्वेद आगे आ गया? हमारा एक अच्छी बात है कि चलो ट्रेडिशनली whatever is written in the classics we should follow, उसको मानना चाहिए, सब करना चाहिए, पर जैसे जिसको कहते हैं कि वो डंडा पकड़ के बैठ जाना, वो नहीं करने का। Because you are young generation and keep these things in the mind. अगर हमारा प्रिंसिपल जो बेसिक प्रिंसिपल है वो अगर हर्ट नहीं होता है तो उसके आसपास कुछ भी करो, there is no issue। वो वही है, आप हर चीज़ को हम थोड़ा सा डेविएशन होता है पर हम इस चीज़ को क्यों नहीं करते? चंद्रप्रभावटी, आई गिव वन एग्जांपल। चंद्रप्रभावटी के इंडिकेशंस कितने हैं? हाउ मेनी इंडिकेशंस चंद्रप्रभावटी किस किस में दे सकते हैं?
बस एक प्रमेय। मोर देन 20 इंडिकेशंस, शायद 20 भी मैं कम बोल रहा हूँ, है ना, है कि नहीं? और उसका प्रशंसा कैसे किया है? अगर आप चंद्र प्रभावटी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि दिस इज अ ब्रॉड, मोर देन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, दिस कैन क्योर एनीथिंग। आपको लगता है कि नहीं? वंस यू विल रीड द इंडिकेशंस, डोंट यू हैव अ फीलिंग दैट यार एक चंद्र प्रभावटी है, यू कैन डू अ लॉट विद चंद्र प्रभावटी, यू डोंट नीड एनी अदर ड्रग। तो आपको क्या लगता है? आपको ये लगता था जब पढ़ते थे, मुझे तो लगता था कि यार ये क्या उल्लू बना रहे हैं। आपको ऐसा लगता था या लगता है? लगता है या नहीं? अरे बोलिए, कुछ तो बोलिए यार। मैं कोई मैं जाके अब क्यों? अच्छा, तब क्यों लगता था और अब क्यों नहीं लगता? वही हमारा प्रॉब्लम है, पता नहीं होता। मीन्स इट्स नॉट योर फॉल्ट, सबका यही हाल है। आपने कम से कम जवाब दिया। वी आर कंफ्यूज्ड इन मैनी थिंग्स, और हमारा कंफ्यूजन ही क्लियर नहीं है तो हम स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन कैसे क्लियर करेंगे? और हाल ये है कि स्टूडेंट जब क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, मेरा भी एक्सपीरियंस है ये, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैं जब आया तो टीचर को, भाई हम साइंस से पढ़ के आए हो आप, एंड इफ यू आर कमिंग बाय मेरिट, आपका अच्छा वो भी है, स्टूडियस बंदा आया है, वो आके पूछता है सर, जैसे पदार्थ पढ़ना शुरू होता है या ये सब शुरू होता है तो पहले तो उसको आउट ऑफ द वर्ल्ड लगता है, फिर वो कैसे भी दिमाग सेट करके घुसने की कोशिश करता है, फिर कोई क्वेश्चन पूछ लिया उसने, अगर टेंडर क्वेश्चन पूछ लिया कि जिसको क्वेश्चन सर को भी नहीं आता, गया वो, उसको इतने काउंटर क्वेश्चन होंगे, ये तुमने पढ़ा है, वो तुमने पढ़ा है, बहुत होगा तो वो अष्टांग का वो पढ़ के आना, एंड देन टॉक टू मी, और फिर अगर वो भी करके आ गया तो उसको और घुमा देंगे, और अल्टीमेटली बहुत अगर वो लगा रहता है तो एक दो बार उसको ऐसा खींच लेंगे पब्लिकली, तो अगले बार वो खड़ा ही नहीं होगा, उसको ज्ञान हो जाएगा कि भाई प्रश्न पूछना बेकार है, और या तो जवाब आएगा तो कैसा जवाब आएगा कि वो भूल जाएगा प्रश्न क्या पूछा था, इतना लंबा चलेगा उसका कि ही विल फॉरगेट फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड, वो क्या पूछा था निकलेगा क्या। तो दिस इज द रियलिटी, ये वास्तविकता है ना। अल्टीमेटली हम ये कहते हैं कि यार बच्चा हमारा आयुर्वेद प्रैक्टिस नहीं करता, जीपी करता है, क्या करेगा बेचारा, वो खुद क्लियर नहीं, उसको लगता है मेरा टीचर भी क्लियर नहीं, कोई क्लियर नहीं, जिसको जाके पूछो हाँ मैं देखूंगा। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारे टीचर्स ये भी नहीं कहते मुझे नहीं पता, ऐसा कहने में तो पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसे कैसे वो विद्वान कम हो जाएंगे कि कह दिया कि मुझे नहीं पता। अरे भाई नहीं पता होता ना यार, दुनिया में सब कुछ सबको थोड़ी पता है। चरक ने भी कह दिया था कि ये मेरा अधिकार नहीं है, दूसरे का अधिकार है, मुझे नहीं पता। तो हम उससे भी क्या नहीं हो जाएंगे कि आई नो एवरीथिंग आई नो। दैट इज द इशू। वी हैव टू चेंज दैट एटीट्यूड एंड वी हैव टू ब्रिंग द साइंटिफिक एटीट्यूड। आपको ठीक है ये आरओटीपी में आओ, अच्छी बात है, बट इफ यू गेट द अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट 4-5 साल में एक बार एकाध रिसर्च मेथोडोलॉजी का या एकाध कोई भी साइंटिफिक मीन्स जो बेसिक साइंस वाले करते हैं या तो मेडिकल साइंस के किसी भी उसमें जो रिफ्रेशर्स कोर्स होते हैं, एक बार अटेंड करके आना। व्हाई आई एम टेलिंग, मैं ये नहीं कहता कि आप रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं जानते या वो सब नई चीज़ें जानते, थोड़ा तो उधर भी मिलेगा, बट द एनवायरमेंट, द एटीट्यूड जो आपको मिलेगा वो आपको बदल देगा। हमारे वहाँ ये है कि भाई स्टूडेंट बैठा है और वो टीचर को एक लेवल से आगे पूछ नहीं सकता, ऐसे ही बिहेव करना है। दो हम पढ़ाएंगे कि चरक ने कहा है, सुश्रुत ने कहा है कि 16 ईयर्स से ज़्यादा है तो मित्रवता आचरित, और वो मित्रता तुरंत गायब हो जाती है जैसे उसने कुछ पूछ दिया या कुछ कर दिया, है ना। तो वी हैव टू चेंज द एटीट्यूड एंड वी हैव टू क्रिएट सच एन एनवायरनमेंट कि सबको कुछ करने की प्रेरणा हो, एंड डरे डरे से न रहे और कहें, जैसे मैडम ने कहा है कि मुझे नहीं पता था, मैं मानती थी कि पता नहीं है क्या है, अब मैं मानती हूँ कि नहीं
सही होगा, पर पता नहीं क्यों मानती हो, बिकॉज सबकी ये हाल है, कंफ्यूज। अरे भाई कंफ्यूज है जहाँ, वो कौन है कि कंफ्यूज है? मैं नहीं कहता मैं सब कुछ जानता हूँ, पर जहाँ जान सकते हो वहाँ करने की कोशिश करो, करनी चाहिए, उसमें डीप जाना चाहिए। एंड सो चंद्रप्रभावती की मैं बात कर रहा था, तो उसकी इतनी सारी प्रशंसा करी है, और नाम भी देखो बढ़िया सा दिया है, चंद्रप्रभा, चंद्र की प्रभा जैसे उसकी इफेक्ट है, या चंद्रकला रस, या क्या क्या नाम दिए हैं वो, सूतशेखर रस, और व्हाट्स ऑल, ये सब क्या है? फिर मैं कभी देखता हूँ, आप देखते हैं टीवी में कुछ चैनल्स में ऐड आते हैं, एक ऐप आता है, इंस्ट्रूमेंट आता है छोटा सा, आपने सबने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, कि उसमें पैर डालो और स्ट्रिंग से खींचो, वो कहता है कि आपकी टमी भी चली जाएगी, आपका शेप भी आ जाएगा, आपके इसको भी टोन मिलेगा, इसको भी टोन मिलेगा, सब कुछ हो जाएगा। एंड इफ यू हैव दिस इंस्ट्रूमेंट, यू डोंट नीड टू गो टू जिम, यू डोंट नीड टू वॉक, कुछ नहीं। या एक दूसरा वो आती थी सुधा सिद्धि, या कुछ ऐसे बहुत सारे, या कोई यंत्र, संधि सुधा, है ना, ये लो तो ऑस्टियोआर्थराइटिस तो क्या चीज़ है, कुछ भी होता है, या कुछ यंत्र आएगा कि ये यंत्र ले आओ, एंड लक्ष्मी आ जाएगी आके सब, और वो आधा घंटा बोलता रहता है, हाफ एन आवर, प्रेज द लॉर्ड। सो इट्स ऑल मार्केटिंग, कुछ नहीं है उस स्प्रिंग में, तब भी इतना गाना गा के वो बेचते हैं, है ना। तो आपके चंद्रप्रभा में तो बहुत कुछ है, उसको अधिकार है ना बेचारे को इतना बोलने की कि भाई ये कर देती है, वो कर देती है, करती तो होगी। और वही सिस्टम प्रियवत शर्मा ने अपनाया थोड़ा बहुत, कोई भी ड्रग उठा के देख लो, हर सिस्टम पे काम करता है। कोई भी ड्रग ऐसा नहीं है मीन्स एक भी सिस्टम पे काम न करता, ऐसा नहीं है, एक्चुअली नहीं होता, पर मार्केटिंग है, मार्केटिंग में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, बोलना चाहिए, करते रहना चाहिए। आपके हॉस्पिटल में पेशेंट आया, आपको लगेगा कि पेशेंट मर जाएगा, आप पकड़ोगे नहीं, क्यों? डर लगता है, पता नहीं मर जाएगा तो कहेंगे कि आयुर्वेद वाले ने मार डाला। साला मॉडर्न में हर रोज 10 पेशेंट मरता है, 25 पेशेंट मरता है, कोई नहीं पूछता, और एक आपसे मर गया तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम हमारी है, उनकी नहीं, मरेगा ना यार, वो उसको कह दो। पेशेंट्स आर रेडी, हमारे वहाँ बहुत सारे पेशेंट, बीच में मैंने तो बहुत शुरू किया था, अभी थोड़ा कम कर दिया क्योंकि मैं पूरा टाइम नहीं दे पाता। ऑल द टर्मिनल पेशेंट्स विल कम एंड वी विल एडमिट। मैं बच्चों को छूट देता था कि भाई करो एक्सपेरिमेंट, इस पे जो करना है करो। उसके पेशेंट फैमिली मेम्बर को कह देंगे कि देखो प्रत्याख्यान पूरा कर देंगे, देखो ये कब जाएगा, क्या होगा, वी डोंट नो। और उसको भी पता है कि वहाँ से कह दिया है कुछ नहीं हो सकता। और ज़्यादातर लोगों की ये टेंडेंसी होती है ना कि घर कौन ले जाएगा, यहाँ रखो ना, तो दे आर रेडी टू डू ऑल दैट थिंग्स। और सोशल स्टिग्मा भी होता है, इश्यू भी होता है कि भाई घर ले आए, कुछ उसकी ट्रीटमेंट नहीं करी, ऐसे ही मार डाला, इसलिए वो हॉस्पिटल में रखना चाहती हूँ। डू एक्सपेरिमेंट्स, आपके पास आ रहा है, बच्चों को दो, कर रहा है जो कर, उसको वमन करवा, विरेचन करवा, सद्य करवाना है सद्य करवा, घी पीना है, बिना देना है वमन दे, जो कर, वी डू ऑल द थिंग्स। डॉक्टर आजकल इज देयर, शी नोज वेरी वेल। हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। एंड और टीचिंग इंस्टीट्यूट में अगर ये नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस कैसे गेन होगा, कैसे आएगा किसी को? क्योंकि वो दृष्टकर्मा और जीत हस्त कैसे बनेगा अगर इफ यू वांट अलाउ दिस थिंग्स, है ना। और एक आध दो पेशेंट मारोगे नहीं ना, तब तक तो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। 4 पेशेंट में रक्त चंद्रिका आएगी तब आपका वमन ठीक होगा, उससे डरो मत। बट टेक केयर कि आपकी क्लिनिक में रक्त चंद्रिका नहीं आनी चाहिए। ये अमृता हॉस्पिटल में आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पर आपके पर्सनल पेशेंट में आई तो प्रॉब्लम है। सो यू हैव टू टेक, भाई मेडिकल में क्या होता है, मॉडर्न में क्या होता है, वो सर्जन कोई है वहाँ तो जितने मार सकता है, जो एक्सपेरिमेंट करना कर सकता है वो करता है, ठीक है। फिर वो अपना नर्सिंग होम खोला, वहाँ उसको लगा कि यार ये मरेगा, तो 2 घंटे के बाद मरने की आशंका है, रिफर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गया वहाँ मरे, मेरे वहाँ नहीं मरा। So if you are in private practice, it's okay. But if you are in private institution or government sector, करो ना, डेयर करो और सीखो और सिखाओ। So थोड़ा डेविएशन हो गया,
then माने कि it will help to know in better views about the nature of kapha pitta present in the body. It will help us to assess the difference or deviations getting after the usage of various types of common drugs. It will help us to judge directly the quantity of kapha and pitta vomited during vomit. हम लोग क्या करते थे इसके लिए कि पहले तो जो वोमिटस आया उसको मेजर करना है और एक बकेट में डालना है, इसमें बड़ा ग्लास भर के बकेट में डालना है, एंड ऊपर जो म्यूकस है उसको ले लेते थे पहले, सीधा म्यूकस दिखता ही है अलग ही, उसको कलेक्ट करके रख लिया, क्योंकि आप कैसे तय करोगे कि कितना कफ आया, जनरली वी कंसीडर एज अ म्यूकस, है ना, तो वो कफ उसमें तो यष्टिमधु भी आया है, उसमें दूध भी आया है, सब कुछ आया है, म्यूकस कैसे तय करोगे, तो उसको अलग करके ले लिया। फिर लास्ट में जो मटेरियल बचा वो भी थोड़ा सा उसको सेटल डाउन होने देंगे तो वात द्रव्य जो है वो नीचे बैठ जाएगा और वो म्यूकस थोड़ा लिक्विफाई होकर ऊपर रहता है। अगेन यू हैव टू कलेक्ट इट एंड देन यू मेजर, क्योंकि जो ये कहा है कि 2 प्रस्थ 1.5 प्रस्थ एंड 1 प्रस्थ, तो वो तो आपने 4 लीटर पिलाया है, अगर वो गिनोगे तो वो तो उससे कहीं आगे चला गया, अगर वो टोटल मटेरियल गिनोगे तो इट्स नॉट अबाउट द टोटल मटेरियल। नेक्स्ट, सो वी कंसिडर द रेंज, क्योंकि ऐसे तो होगा नहीं कि भाई 1000 मीन्स 2 प्रस्थ इज अराउंड दिस 1 लीटर, राइट, सो ऐसे तो होगा नहीं कि ऑल द टाइम इट विल बी 1 लीटर, सो 900 ml है तो कहाँ कंसिडर करेंगे उसको, प्रवर में या मध्यम में, देन वी डिसाइडेड कि उसको दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसका आधा करके, आधा इधर जोड़ दो आधा इधर जोड़ दो, रेंज बन गई। सो दैट इज द रेंज कि 945 से 1215 ml तक होगा, इट्स अ प्रवर, देन अनदर इज मध्यम एंड देन अनदर इज अवर, सो वी प्रिपेयर अ रेंज, वी गेव इट अ लिटिल बिट साइंटिफिक पजामा पहनाया। नेक्स्ट, तो सीधी बात है वही करना है। एंड देन मानी कि शुद्धि इंडेक्स भी डेवलप, उसमें हमने क्या किया कि मटेरियल जो हमने दिया और मटेरियल इनसाइड मीन्स वॉल्यूम इनसाइड इज मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनपुट, बाय दिस यू विल गेट कि अंदर कितना मटेरियल रह गया, आपने जितना मटेरियल दिया उसमें से कितना बाहर आया और कितना अंदर रह गया, ये इससे आता है। और मानिकी इंडेक्स मीन्स मानिकी शुद्धि इंडेक्स जितना हाई है उतनी शुद्धि कम, मानिकी शुद्धि इंडेक्स इज हाई दैट मीन्स मटेरियल अंदर ज़्यादा रह गया, अगर वो लो है तो मटेरियल कम है, इफ इट इज 0 और इट इज माइनस दैट इज द बेस्ट शुद्धि। सो दैट वाज द डिसाइडेड। नेक्स्ट, दिस वाज द फॉर्मूला एंड देन वी ट्राइड टू डू बायोकेमिकल एनालिसिस। हमने बहुत पूछा सब बेसिक साइंस के एक्सपर्ट्स और उन सबसे कि भाई कब से हम क्या लें, एक स्टडी हुआ है बीएचयू में हिस्टामिन का, पर हिस्टामिन हर जगह हम कफ नहीं ले सकते, उसके कॉम्प्लिकेशन थे, तो हमने हेक्साजेमाइन विच इज़ अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड उसको नापने की कोशिश करी, टोटल प्रोटीन और ग्लूकोज जो कफ को थोड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसे मटेरियल को वॉमिटस से नापने की कोशिश करी कि कितना आता है। नेक्स्ट, सो दिस थिंग्स वी फाउंड कि भाई 40 to 49 में इतना कॉन्सेंट्रेशन एक्सोजेमाइन का वॉमिटस में मिला एंड ऑल दिस थिंग्स वी डन, बट इसके आधार से हम कुछ अभी कह नहीं पा रहे हैं सिर्फ ऑन बेसिस ऑफ दिस, बिकॉज वी डोंट हैव रेफरेंस रेंज कि भाई इतना हेक्सोजेमाइन निकला तो इट्स द बेस्ट और इतना निकला तो ये मध्यम है अवर है। सो बहुत सारे स्टडीज़ होंगे, 2 स्टडीज़ हमने किए हैं, अभी आगे करेंगे, तो then we will be able to say about this. Next please. And then we did biochemical analysis also. I won't discuss in detail because next pH जो मैं सुबह बात कर रहा था, डॉक्टर साहब ने अच्छा काम किया है, वो सल्फर डालने के पित्त निकला कि नहीं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमने सिंपल मेथड यूज़ किया था एंड इट्स वेरी यूजफुल दैट इफ यू पुट pH पेपर, इफ इन द बिगिनिंग वी नोटेड दैट इट वाज एसिडिक बिकॉज वो गैस्ट्रिक
juices are which are acidic in the nature. When the pitta comes, it becomes alkaline. It goes up to the next to 7.61. तो 7 से ऊपर जब जाता है alkaline आता है, that means पित्त is coming down. So pH is above 7, that means पित्त आ गया, वो आपका पित्त हो गया. Next please. Then लेगी की criteria definitely immediate after, और उसके बाद उसका स्कोरिंग करके हमने उसको तय किया. Next please. Next. So this was the scoring we have given for Leguic criteria. Next. Then we also measured, this total cholesterol and all the lipid profile and SGOT, SGPT. All the things were little bit reduced. SGPT and SGOT तो significantly reduced हुए, and triglyceride and all that things were also reduced, but they were statistically not significant, but were reduced. So हम ये जो कहते हैं कि घी पिलाने से ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ होता नहीं. Next please. एक इंटरेस्टिंग केस आपको मैं शेयर करूँगा, एंड आई गेव द सेम पेशेंट टू हैंडल टू डॉक्टर राज कला. एसोसिएट प्रोफेसर इन द मेडिसिन थी वहाँ हमारे वहाँ, और उनकी मदर, एंड शी वॉज टेकिंग दिस एल्प्रेक्स और ट्राइका whatever you say. वो टैबलेट लेने की हैबिचुअल थी. उनको कितनी लेती होगी? डू यू हैव आइडिया कितनी ले सकती हैं वो दिन में? एल्प्रेक्स 0.5 mg शी वॉज टेकिंग एवरी डे. कितनी लेती होगी? 4. और कोई जोर लगाओ. 10. 80 tablets, 0.5 mg, 80 tablets she was taking, and then even she was not sleeping at that time. No, एक साथ 80 गोलियां लेने के बाद वो सोती नहीं थी. And then that associate professor, अभी तो शायद हुई नहीं प्रोफेसर, मुझे नहीं पता, बट देन शी वॉज नोन टू मी. तो उन्होंने कहा कि सर ये इसका कुछ आपके वहाँ हो सकता है. मैंने कहा हमारे वहाँ ही हो सकता है, आपके वहाँ कुछ नहीं हो सकता इसका. भेजो, उसको इतनी रुक्षता बढ़ गई होगी कि ये आप कुछ भी करोगे नींद नहीं आएगी. और 80 वो मैंने कहा आप रोकती क्यों नहीं उसकी? तो बोलती वो मेडिकल स्टोर में जाती है, मैं फला डॉक्टर की मम्मी हूँ और मुझे चाहिए, तो वो मना नहीं करता. अब और हर बार अलग मेडिकल स्टोर को पकड़ती है. अब मैं हर मेडिकल स्टोर पे जाके तो कह नहीं सकती ना कि मेरी मम्मी आएगी तो देना मत वो. सो दैट वाज द थिंग. और उसको हमने विरेचन करवाने के लिए कहा, विरेचन करवाया, शिरोधारा भी की और वो सब भी किया, बस्ती भी प्लान की थी. उनका सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन था, सर ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ जाएगा ना घी खाने से? तो आई गेव हर एश्योरेंस नहीं बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर उसको विरेचन किया, स्नेहपान किया, एंड देन शी आस्क्ड कि आप लोगों ने क्या किया, इसको कोलेस्ट्रॉल कम कैसे हो गया? विरेचन, स्नेहपान और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल डाउन आ गया. शी वॉज सो सरप्राइज. फिर तो हमने उसके बाद बहुत सारे काम उसके साथ किए, अभी भी कर रहे हैं. सो दैट इज़ द ब्यूटी. आपकी ये जो सब चीज़ें हैं उसको ज़रा जोर से दिल लगा के करो तो यू कैन डू मिरेकल्स. नेक्स्ट प्लीज. फिर वो उसको वो शी केम आउट ग्रेजुअली फ्रॉम इट. अभी तो वो स्टेबल है, अभी कोई इशू नहीं है. हाँ, उसको वो भी लिया था हमने, टगर दिया था, मेंटेट दिया था, बहुत कुछ शिरोधारा करी, बस्तियाँ करी. सो दिस इज़ द कंक्लूजन. उसको मैं बहुत कंक्लूजन में नहीं जाता क्योंकि आई थिंक वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. इनका भी लेक्चर में लेने जा रहा हूँ. और अगर पक गए हो तो बता देना, आई विल स्टॉप इमीडिएटली, है ना. तो ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं कहीं बीच में नहीं आऊँगा, कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा फ्यूचर में भी. समबडी सेज सर स्टॉप इट.
नेक्स्ट प्लीज, छोड़ दो उसको, जाने दो. Some another interesting studies we have carried on women. You know, आपके बॉडी में जो भी ये फैट और कोलेस्ट्रॉल और वो सब का जो भी या रिटर्न मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उससे बहुत सारे फ्री रेडिकल्स उत्पन्न होते हैं, है ना. सो ऑल द फ्री रेडिकल्स, उसमें से एक है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, विच इज़ द मोस्ट कॉमन. सो इट्स कॉल्ड लिपिड पेरोक्सिडेशन. और उसकी वजह से इफ इट इज़ नॉट करेक्टेड प्रॉपरली, देन इट मे कॉज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, एस्थमा, insulin dependent diabetes, because it hampers beta cells and all that. Lot many things happens in your body, and that's why वो बात मैं बोलता हूँ. So it is a it aggravates the initial tissue injury, or even it causes apoptosis of the cell, all this lipid peroxidation. Now next, catalase is a enzyme which protect our body from this lipid peroxidation. What catalase do? Hydrogen peroxide means H2O2, and this catalase will separate this hydrogen and oxygen in your body. So it's as antioxidant. तो आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल की एक्टिविटी है उसको डाउन कर देगा, कम कर देगा, या इट विल रिमूव. नाउ नेक्स्ट प्लीज. दिस इज द सिचुएशन आफ्टर वमन ऑफ द कैटालेज एक्टिविटी एंड लिपिड पेरोक्साइडेज एक्टिविटी इन द ब्लड. वमन लिया, उसके तुरंत बाद एक सैंपल लिया. आफ्टर 10-15 minutes another sample. After third phase and fourth phase, at the end of the woman, all 4 phases, 4 samples were taken, and in that sample 1, sample 2, sample 3 and sample 4, you can see that as woman goes on, gradually level of the catalase activity increased, and the parallelly activity of the lipid peroxidase reaction was decreased. क्लियर है? दोनों को कंपेयर कर लो कि जैसे कैटालेस बढ़ा, लिपिड पेरोक्सिडेशन कम. दिस इज द इफेक्ट ऑफ वमन, एंड दैट्स व्हाई दे हैव टोल्ड, हो सकता है विरेचन के बाद भी यही मिले. दैट्स व्हाई दे हैव टोल्ड कि एवरी 6 months या पीरियोडिकली यू शुड गो फॉर वमन या विरेचन. सो all the toxins from your body will be removed, and it will. और इसका ये जो लिपिड पेरोक्सिडाइज्ड है, मीन्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और उनका इफेक्ट क्या है मालूम है? इट वर्क्स एज अ डीएनए म्यूटेंट. मीन्स आपके जीन्स डीएनए को म्यूटेंट कर देता है. मीन्स कुछ जीन्स जो आपके एक्टिव है बॉडी में, उसको म्यूट कर देगा, वो अपना काम करना बंद कर देगा, म्यूट हो जाएगा. मीन्स तो ये जो कैंसर होना या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होना जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता, वो यहाँ से होता है. और वो निकल जाने से वो म्यूटिंग की एक्टिविटी है वो बंद हो जाएगी. सो जीन लेवल पे वमन एंड विरेचन काम करते हैं. सो दैट्स व्हाई इट हैज़ बीन टोल्ड कि वो एक लक्षण बोला है इंद्रिय संप्रसाद, है ना. दैट्स व्हाई इट इज अचीव इंद्रिय संप्रसादन बाय दिस वमन एंड विरेचन. ये सब निकल जाएगा तो ऑब्वियसली आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, एंड यू विल फील लाभ. Hexosamine, in the beginning it was high because जैसे मैंने कहा म्यूकस बहुत आता है पहले शुरू के बाउल्स में, and then gradually फिर steady रहा. But we don't have idea कि उसका मतलब क्या है, मायने क्या है. We don't have an idea right now. Next please. Next. These are some interesting study. हमारे वहाँ एक पेपर आया था, और वो पेपर आई वुड लाइक टू डिस्कस. मैं बहुत डिटेल में अब नहीं जाऊँगा. Some 4 studies are there, and I would like to share with you. ये पेपर पब्लिश भी है, IU में पब्लिश होगा, आएगा. First study has been conducted at IPG Nita. A review paper has been sent from the Hassan scholar's name में भूल जा रहा हूँ. So it has been sent from the Hassan.
उसने 4-5 थीसिस को इकट्ठा करके रिव्यू किया है वुमन के ऊपर. इंटरेस्टिंग. फर्स्ट थीसिस इज कंडक्टेड एट जामनगर. He was my scholar, Ranjit Das. What we did is, एक तो हम ट्रेडिशनली जो मदन फल देते हैं कि भाई 10 ग्राम टुडे, he decided that we should give 10 ग्राम. At our place we give it 6 ग्राम because 6 ग्राम में भी वो काफ़ी होता है. It's a stronger one. So वो एक होता है. And another, actually what is the classical dose? अंतर्नक पुष्टि. सो हमने ये किया कि अंतर्नक पुष्टि एक ग्रुप में हमने तय किया कि वन ग्रुप वी विल गो फॉर ऑल द क्लासिकल टाइप ऑफ वेरिएशन. वी विल टेक मदन फल, पिपली, अंतर्नक पुष्टि, एंड देन वी सॉक्ड इन द यष्टिमधु क्वाथ ओवरनाइट, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी विल गिव टू द पेशेंट. एंड once only we will give akanta pan, and then we will give the medicine, and the whatever one takes place we will go for. Next please. And another group was traditional one. उसमें हम जो रूटीन मदन फल पिपली जैसे बिना संस्कारित किए हुए लेते हैं वो लिया, एंड जो स्नेहपान आकंठ पान करवाने के बाद भी पिलाते रहते जब तक पीत ना आए वो किया. Next. So if you will see the result, it was observed that the woman by classical method clinically more effective by 17%. Classical method से जो किया 17% more effective, and it was statistically significant. Signs and symptoms में जो relief मिला. It was observed that 6.74% more Vegas were seen in the classical method when compared to traditional method, but statistically insignificant. Next. लैंगिक शुद्धि was observed more 5% in the classical method. Value of hexosamine was observed more 28%. And average अंतर्नक पुष्टि सबका लिया तो एवरेज उसका निकाला तो it was around 13.51 ग्राम, मीन्स ऑलमोस्ट अराउंड 1 तोला, जो कि क्लासिक्स में कहा है 1 तोला के आसपास आया. Now if you go through studies, आपने क्या मीन्स what you perceive कि क्लासिकल ज़्यादा अच्छा है, ऐसा लगा ना डेटा से. बट अगेन वो एक भ्रम है. क्लासिकल पहले तो ये ब्लाइंडिंग हो नहीं पाएगा क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि क्लासिकल से किया या उससे देयर इज नो ब्लाइंडिंग. सो थोड़ा बहुत तो हमारा बायस बीच में आ ही जाता है जो एसेस करता है कि यार ये क्लासिकल है सो डेफिनेटली इट विल बी बेटर. और वो ये उतना ही 17% का चेंजेस है या 6% का चेंज है, तो अगर आप उसको वो डिग्री गिनो ना तो उसके कोई मायने नहीं रहता. एंड स्टेटिस्टिक्स इज अ फनी थिंग. स्टेटिस्टिक्स बहुत फनी थिंग है. आप उसको जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगा. नहीं स्टेटिस्टिक को आपको जैसे मोड़ना है ना आप मोड़ सकते हो. एक एग्जांपल मैं दूंगा कि जैसे व्हेन आई वाज डूइंग पीएचडी, ये घटित हुई घटना है पीजी में बॉयज़ हॉस्टल में. वहाँ ऐसे सिस्टम है कि ऊपर से निकले नीचे आए तो नीचे न्यूज़पेपर रहता था. 8 बजे तैयार हो गए, नीचे आए न्यूज़पेपर रहता है, टाइम्स आता था. एंड देन 8:30 या 8:45 विल गो टू द इंस्टीट्यूट. तो 15 दिन एक दिन मैंने पढ़ा कि इफ़ पर्सन स्मोक्स तो उसकी लाइफ से एवरेज 2 years रिड्यूस हो जाता है. स्टेटिस्टिक्स वो सबका डेटा कलेक्ट करके कि अगर कोई स्मोकिंग करता है तो कंपैरिजन टू नॉन स्मोकर्स उसकी ज़िंदगी के 2 साल कम हो जाते हैं एवरेज लाइफ. देन आफ्टर 15 days और 20 days अगर अगेन अनदर स्टडी वाज पब्लिश्ड इन कंपैरिजन टू अनमैरिड पर्सन. मैरिड पर्सन्स लिव्स लॉन्गर फॉर 2 years. 2 साल ज़्यादा जीता है जो शादी करता है. हमारी मान्यताओं के विरुद्ध 2 साल ज़्यादा जीता है. नाउ यू कंपेयर बोथ दिस स्टडीज. स्मोकिंग करते हो 2 साल कम हो जाएगा, शादी करो 2 साल बढ़ जाएगा. स्मोकिंग करो शादी करो, नो लॉस नो प्रॉफिट, वेरेवर यू आर वहीं हो. दिस इज द फन ऑफ द स्टेटिस्टिक्स. स्टेटिस्टिक्स वो आप जो दिखाना चाहते हो वो दिखा सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें स्टेटिस्टिक्स की बात कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे. नेक्स्ट प्लीज.
सिंगल ग्रुप स्टडी, उसमें एक कुष्ठ के पेशेंट लिए गए थे, एसडीएम कॉलेज में ये स्टडी हुआ था, एंड उनको कुटज सिद्ध कृचरा खिलाया गया। जैसे अभी कोई कह रहा था ना कि बाल और उनको सबको देना, तो भाई वो आकंठपान करवाने के बजाय, अरे वो ड्रग देने के बजाय कुटज सिद्ध कृचरा मदन फल की जगह, मदन फल पिपली पिलाने की जगह, एंड रिजल्ट्स देखो। कृचरा कैसे प्रिपेयर किया था, मीन्स 1 part राइस, मूलक 1/4 part सैंडल लवण और हिंगू और ऑल दैट थिंग्स, एंड 6 part वाटर डाल के कुक किया, एंड कुटज बीज चूर्ण 12 ग्राम वॉज मिक्सड विथ हनी एंड सैंडल, एंड देन कृष्णा वॉज गिवन फॉर द इन द सुपोषण कंडीशन। वमन कर्म में 22 पेशेंट हैड लैंगिकी लक्षण, मीन्स लैंगिक शुद्धि के लक्षण मिले, दैट इज 73.3%। आंतिकी was found in 73%, मानी की शुद्धि was 66%, and in relation to शुद्धि it was मध्यम शुद्धि। वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, पर 73 means almost 25% patient do not found पैथिक पित्तांत लक्षण। सो ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और जैसे उन्होंने कहा कि पेशेंट को चाटने को तैयार नहीं है, तो दिस कैन बी ऑप्शन, इवन कुटज के जगह मदन फल भी दूसरा में ऐड कर दो, हो सकता है। सो यू कैन यूज दैट। नेक्स्ट, और एक कुष्ठ में भी उनको रिजल्ट ठीक ठाक मिले, बहुत कुछ एकदम वो नहीं कहेंगे, बट देन इवन इट इज गुड रिजल्ट। नेक्स्ट प्लीज। द थर्ड स्टडी वॉज a randomized study, interventional clinical study was conducted comprised of 30 subjects fulfilling criteria विचर्चिका, और उनको भावित मदन फल पिप्पली चूर्ण और सिंपल मदन फल पिप्पली चूर्ण। उन्होंने क्या किया कि भावना के लिए क्या करना होता है कि जितने चूर्ण को भावना देती है उतना ही चूर्ण लेके उसका क्वाथ बना के यू हैव टू गिव भावना। सो मदन फल पिप्पली को मदन फल पिप्पली की ही भावना दी गई। देखिए आई थिंक 3 भावनास, कैसे मिक्सचर में घुमाया, क्वाथ डाल के मदन फल पिप्पली डाल के घुमाया, वो सॉलिड हो गया, फिर से क्वाथ डाला, फिर घुमाया, फिर सॉलिड हो गया, 3 times दे डिड इट, एंड देन उसको छाँव में सुखाया, एंड दैट पिप्पली वॉज गिवन, एंड एक पेशेंट को सिंपल जो हम देते हैं ऐसा पिप्पली दिया। नेक्स्ट, एंड व्हाट दे फाउंड कि ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, रिजल्ट, उनको मदन मीन्स भावित पिप्पली से, अच्छा उन्होंने जो बिना भावना के पिप्पली थी, इट वॉज गिवन फॉर मीन्स गिवन इन द डोज ऑफ 12 ग्राम, एंड भावित पिप्पली वॉज गिवन 4 ग्राम, एंड ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट्स वर फाउंड। नेक्स्ट प्लीज। Same results were found, self-start woman among whole data, Swayam Pravrutti of woman was observed in 14 subjects in each MPC means without bhavna, and BMPC means with bhavna, and for remaining 1 subject in each group was induced by finger. Time taken to start woman week during woman karma, average time taken to start first woman in MPC group 22 minutes, और उसमें भी 25 minutes, means almost same results were found. तो फायदा क्या हुआ, उसमें 12 ग्राम देना पड़ा, इसमें 4 ग्राम से काम चल गया। सो वी शुड अडॉप्ट इट, क्लिनिकली इट इज प्रूवन। नेक्स्ट, बाकी सब ऑलमोस्ट इज द सेम। नेक्स्ट, नेक्स्ट, I have told all these things. Then another single blind clinical study was done at the Udupi to study the effect of woman on electrolytes and all that things, sodium chloride और वो सब लेवल पे, and the result was, electrolyte नीचे ले आओ थोड़ा, ऊपर सॉरी और जो हाईलाइट है ना, electrolytes and pH analysis by gas blood gas analysis, the assessment of serum electrolytes was carried out at 3 intervals, मीन्स वमन देने के पहले, वमन करने के बाद और पेयादिक्रम करने के पहले, मीन्स पेया देने से पहले 3 times दे दीजिए। नेक्स्ट,
and result shows that immediate after Vaman थोड़ा सा level derange हुआ था, but before Peyapan almost everything came to the normalcy. Means electrolytes level पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और विरेचन में भी हमने ये स्टडी करवाया है, और विरेचन में भी इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है. So these were the studies I wanted to share. And another book, शायद आपको नहीं पता होगा, मैं लास्ट टाइम 15 दिन पहले गया था, 15 दिन नहीं तो महीना भर पहले, और तब डीजी ने खुद मुझे बुक दिया था, डीजी CCRS has published this book, a validation studies of Bowman procedure. In this book they have collected all this data. उन्होंने भी स्टडी किया है कि क्या क्या चेंजेस आते हैं और क्या क्या होता है. They have do all the things in the scientific manner. You should have this and you should go through these things. So next, जाने दो इसे हम चर्चा कर चुके हैं. So science fishes in the sea of reality with particular kinds of nets called scientific methods, and there may be much in the sea which the meshes of the scientific net cannot catch. समझ में आया ये बात कि आप जो साइंस के नाम की नेट डालते हैं तो उसमें पकड़ आया उतना ही साइंस है और उतना ही सही है, ऐसा नहीं है. साइंस की समझ में नहीं आ रहा और साइंस की पकड़ में नहीं आ रहा, वो भी अस्तित्व रखता है. एज आई टोल्ड कि साइंस अभी इतना डेवलप नहीं हुआ कि टोटली आयुर्वेद को समझ सके, बट देन इवन हमको वो भाषा बोलनी पड़ेगी फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. लोगों को समझने के लिए वो भाषा बोलनी पड़ेगी. सो वी हैव टू कैरी ऑन आवर साइंटिफिक अप्रोच, एंड आई होप कि मैंने आप लोगों को बहुत बोर नहीं किया. आपने मुझे 2 घंटा टॉलरेट किया, इसलिए आप सबका आभारी हूँ. एंड आई एम थैंकफुल फॉर द ऑर्गेनाइजर्स फॉर इन्वाइटिंग मी एंड गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई थॉट्स विथ यू. थैंक यू ऑल.